friends, how are you doing today? Thanks for joining me for today's video जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं sample answer to one of the latest cue cards, and the cue card is talk about a story you heard in childhood. Well, this is the cue card that the examiners ask most of the time, even though it is not in the list. Since the examiners are going to ask it now, because now it is going to be in the list, so I'm going to share the sample answer with you in this video. And I hope you have already subscribed this channel. If not, please do it right now so that you can get the latest updates related to the IELTS exam and useful videos that would help you in your IELTS preparation along with my YouTube channel. Also subscribe Improve English with Raman, my new channel, which is going to make learning English for you quite interesting and fun. So let's move on and check out the cue card. Talk about a story you heard in childhood. When it was, who told you the story, what the story was, and why you liked it so much. These can be the cues, and now we will discuss the idea behind this story. And as you know, I always share the idea in the regional language and then I share the sample answer in English language. So just bear with me. Story जो आपने सुनी है childhood में, well, हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी सुनी होंगी आपने. इनफैक्ट आजकल तो मैं अपने नए चैनल पे आपके साथ बहुत सारे स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. अकबर बीरबल के, तेनाली के, मुल्ला नसरुद्दीन के, एंड देयर आर सो मेनी. अगर आपने ये मेरा नया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा. इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी हेल्पफुल चैनल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. तो स्टोरीज़ में से कौन सी स्टोरी आप चुनेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ऐसी स्टोरी सुन लीजिए जो आपको अच्छे से आती है, सो दैट क्योंकि उसके बारे में उसने पूछा है कि स्टोरी क्या थी तो हमें थोड़ी सी सुनानी भी पड़ेगी. स्टोरी का थोड़ा सा लिंक भी होना चाहिए. आप किसी न किसी सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं. सुनाई किसने होगी? बड़ी सिंपल सी बात है. ज़्यादातर तो छोटे थे हम तो दादियाँ ही सुनाती थी हमारी. अदरवाइज़ आप चाहें तो आप ये भी बता सकते हैं कि स्कूल में सबसे पहले मैंने स्टोरी यही सीखी थी. बट मैं तो अपनी दादी की ही बात करूँगा. बेड टाइम स्टोरी भी कह सकते हैं या किसी सिचुएशन के साथ जोड़ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने छोटे भाई या बहन के साथ हमेशा लड़ते रहते थे. आपका है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बोल दिया कीजिए. आइल्स में कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ. रादर जितना अच्छा झूठ बोलेंगे, सच लगना चाहिए, उतना ज़्यादा कंफर्टेबली आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर स्पीकिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स. बहुत सारे मेरे वीडियोस हैं अगर आप देखेंगे तो टिप्स एंड ट्रिक्स के. लेकिन ये झूठ बोलना ज़रूर सीख लीजिए, इससे आपकी लाइफ ईजियर हो जाती है. टू बी ऑनेस्ट, वैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आइल्स में सब चलता है. तो मेरे दादी ने ये सुनाई. क्यों सुनाई? क्योंकि मैं अपने भाई या बहन के साथ बहुत लड़ता रहता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक दिन हमारी दादी ने हम दोनों को बुलाया और ये स्टोरी सुनाई. अब आप समझ चुके हैं कि कौन सी स्टोरी है. स्टोरी है वही पुरानी हमारी यूनियन स्ट्रेंथ. बोलना इसके बारे में काफ़ी ईजी है. इसलिए होता क्या, एक फार्मर था, उसके 4 बेटे थे. ऑलवेज यूज टू फाइट विद ईच अदर. और वो क्या चाहता था? उनको यूनिटी का लेसन समझाना चाहता था, मतलब इम्पोर्टेंस बताना चाहता था. तो किया क्या उसने? ही ब्रॉट, मतलब लेके आया. क्या लेके आया? फ्यू स्टिक्स लेके आया. फिर उसने क्या किया? गेव. थोड़ा सा यहाँ पे ग्रामर की दिक्कत हो जाएगी, अब ध्यान से इसके बाद का सैम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने बोलने में गलती की तो समझिएगा. ही गेव अ स्टिक टू ईच, मतलब हर एक को एक एक स्टिक तोड़ने के लिए दी और सबने स्टिक आसानी से तोड़ दी. दे ब्रोक, ख़त्म, पास्ट की बात है. फिर उसने क्या किया? देन ही गेव, फिर से दिया. उसने क्या दिया? अ बंच ऑफ स्टिक, मतलब इकट्ठी करके स्टिक दी उनको. बट दिस टाइम नोबडी कुड, मतलब कोई भी सन नहीं तोड़ पाया. सो यहाँ से उस बंदे ने अपने बच्चों को समझाया कि अगर तो आप इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे, लेकिन अगर आप ऐसे ही लड़ते रहे कोई ना कोई आपका फ़ायदा ले लेगा या आप ऐसे ही स्टिक्स की तरह टूट जाओगे. बच्चे समझे? बच्चे तो समझे, हम भी समझ गए. और उसके बाद हमने अपने दादी से प्रॉमिस किया कि हम भी कभी आपस में नहीं लड़ेंगे. सो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक स्टोरी जिसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके ऊपर आया और जो आपने सुनी. एंड इनफैक्ट वी कैन से दैट मेरे को बाय हार्ट ये स्टोरी याद है. आज मेरा कोई नेफ्यू, कोई नीज, उन सबको मैं ये स्टोरी एक बार ज़रूर सुनाता हूँ, सो दैट दे ऑल्सो लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, या मतलब वो भी इस तरह से अपने भाई बहनों के साथ ना लड़े. आई होप यू लाइक द आइडिया. अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, चाहे प्यासा कौआ
लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता, अब जब कौवे ने पानी पिया और उसकी प्यास बुझ गई तो प्यास बुझना यहाँ पे जाके फंस जाते हैं कि उसको क्या बोलेंगे। एनीवे उसको याद रख सकते हैं दैट द क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट। क्वेंच दैट मीन्स के प्यास बुझना। वेल एनीवे दैट्स अ पार्ट। तो आइए देखते हैं इसका सैम्पल आंसर कैसा होगा। बिफोर आई स्टार्ट दी सैम्पल आंसर फटाफट से देखते हैं कि अगर यही क्यू कार्ड आपको रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो आप स्पीकिंग बूस्टर कैसे बाय कर सकते हैं, जिसमें सारे का सारा लेटेस्ट स्पीकिंग मटेरियल रहता है। और ये एक ऐसा बुक है जो फ्रीक्वेंटली अपडेट होता रहता है। दैट मीन्स इसमें लेटेस्ट कॉन्टेंट्स ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहते हैं। आपको जस्ट एक बार बाय करना है, अगले 6 मंथ तक ये बुक आपको फ्री कॉन्टेंट देता रहता है। Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download Class Plus and enter the ORG code IELTS. To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP, and once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects in INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now. Well, I have read and heard many stories in childhood, and I especially enjoyed listening to stories from my grandmother. And here I would like to narrate my favorite childhood story of a farmer who taught his sons the lesson of unity. One day I was having a fierce fight with my brother, and at that time, our grandmother told us this story of a farmer. There used to be a farmer having 4 sons who always used to quarrel with each other, and the farmer was really worried about them. To teach them the importance of unity, he brought few sticks and asked them to break them into two. All sons immediately snapped the stick, taking no time. Later, the father gave a bunch of sticks to each of his sons to break, but no one could break this time. Then the farmer said, Dear sons, if you will remain together, no one can harm you, else you will be like those broken sticks. Listening to the story, we realized our mistake as the sons of the farmer and felt sorry to our grandmother and promised we will never fight again. I admit listening to this story brought a huge change in our behavior and developed our relationship. In fact, I have told this story later to my nephew and niece too. Overall, it is a story which is my favorite that I heard in childhood. Are you an IELTS aspirant? Are you living out of India? Are you looking forward to purchase IELTS Speaking Booster, the book containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you in any part of the world? This video will demonstrate how you can purchase Speaking Booster in less than 30 seconds that would be containing the latest content of the IELTS speaking exam that the examiner can ask you during the IELTS exam no matter where you are. To purchase Speaking Booster, even if you are not living in India, you need to download IELTS coaching application on your Android phone. If you're an Apple user, please download Class Plus and enter the ORG code IELTS.
To register on this application, you have to enter your email ID on which you will get the OTP. And once you register, you will see the home screen something like this. Click on Store at the bottom and then on Speaking Booster. At the bottom, you need to click on Buy Now, and once you click on it, it would prompt you to choose a state. Since you're not living in India, choose Others as it would reflect only Indian states. And once on the payment page, you can choose debit or credit card payment option. There are few wallet and other digital payment modes as well, like Google Pay if you use that. Otherwise, simply using your debit or credit card, you can make the payment. Although the price reflects in INR, that is Indian National Rupees, still you can make the payment and the amount would be converted automatically without charging anything additional. Now waste no time and purchase Speaking Booster. The direct link of Speaking Booster ebook is also available in the description of this video that you can click now.